basic concepts in chemistry. So this is the name of our chapter, which is very fundamental, and we did very well as far as this chapter is concerned. Just a second. Okay. As far as this chapter is concerned, so basic concepts in chemistry. Though this is the chapter from physical chemistry, this chapter, or whatever the concept we discuss here in the chapter, these concepts are very useful throughout the chemistry, either it is physical, organic, or inorganic. Because though there is a clear classification, physical, organic, inorganic, there are some concepts, some such concepts which are useful throughout the chemistry. It doesn't matter which chemistry we are studying. So that's what we have to discuss here. Additionally, as I stated, I will take you through more fundamental concepts which are not included here in some basic concepts as far as your textbook is concerned. Either it is of board or either it is of NCERT. Okay, so onward. So, till that, as I remember, as I recall, we have seen number one, that you can say importance of chemistry. Okay, simply chem. Number two, that is you can say nature of matter, or simply you can say matter. Number three, we have seen that you can say states of matter. We have seen. Number four, we have to discuss that is classification of matter. This is also classification of matter, that is three states of matter. This is also classification depending on the different criteria. What the criteria we apply according to we have this classification here topic. So out of this, we have discussed importance of chemistry, we have discussed nature of matter, we have discussed the states of matter. As I recall, as I remember, we have discussed this concept. Am I right? So if is there anything missing, please let me know what we are missing here exactly here in this chapter. So we have seen this topics one. Everyone amongst us, even yesterday, Samya has given the revision, what we have seen in the importance of chemistry. Every dimension of life, every sphere of life, or number of things in our daily life with which we are concerned, which we are related. Somewhere it may be directly, indirectly. We are dealing with the chemistry, or things related with the chemistry, or concept related with the chemistry. That is what we have seen, importance of chemistry. Well, we have seen the fundamental needs of human being, that is food, clothes, and shelter, where the chemistry plays a very important role to improve all these things for the growing population of the world, not of the India only, of the world. So this is the role of chemistry we have seen in this fundamental. Furthermore, also we have seen the role of chemistry is also there here in secondary or tertiary, primary, secondary, tertiary needs of the human being, as like we can have material industry, we have production industry, we have energy, as well as we have pharmacology, pharmacy. So these are the different spheres of life which are by the chemistry, and chemistry plays very important role in the development of all these different branches. No doubt. Nature of matter. As I stated, chemistry is a branch of physical science. There are two branches. Chemistry is a branch of physical science where we deal with the study of structure, composition of the matter. Everything is related with the matter, because once we start with studying the science, we deal with the matter. Or we are saying the definition of this matter. Matter is anything which occupies space and has the mass is called matter. Then also we have seen when we discuss with the matter, when we are related with the matter, suppose this pen is a matter. So when we study the chemistry is interested to know the composition here in this matter, structure of the matter, the properties which this matter has. It may be physical or chemical properties, as well as whatever the changes it undergo under different conditions. Suppose temperature is increased, decreased, pressure is increased, decreased. What the change occurs or change occurs with this material matter is studied. That simply you can say the chemical reactions or reactivity of this matter with some other things or other matters. That is also part of the chemistry. So this is the outlook of the chemistry what we study here in this one. So we have seen the definition of matter. Also, we have seen the definition of chemistry. Isn't it? So once again, chemistry is a branch of physical science which deals with the study of composition of matter, structure of matter, the properties of matter, then the changes or the reactivity that matter shows, and finally the use of that matter to the human being. Very use of this matter to the human being is also studied in the chemistry. Matter is anything which occupies space and places, has the mass is called matter, no doubt.
when we comes to this matter has a different classification based on the different criteria. When we talk about the states of matter, how many states of matter? So this is one of the classification based on the state of the matter. There are 3 types of matter which are agreed: solid, liquid, and gaseous state. Plasma state is being proposed by the scientists, but till date not been agreed by the scientist community, and that's why it is not included into the syllabus. So there are 3 states of matter: solid, liquid, and gaseous. No doubt. When we talk about the further classification of the matter, we can say here, matter is also classified into 2 different things. That is, you can say mixture and pure substances. तो मुझे लगता है यहाँ तक पहले जो 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं, now we have to enter the classification of matter. Before entering into the classification of matter, I would like to introduce that you may feel like that this has skipped one part, that is historical development of the chemistry. So we'll have 5 to 6 minutes discussion on that topic, historical development of the chemistry. So you can say this is the 5th topic. You can say historical development of chemistry. Okay. Historical development of chemistry. This is the topic which is just for the understanding, just to get insight into the chemistry's development. This is not important topic for the examination. It don't have any importance for the examination because no one is going to ask you any question related with the historical development of the chemistry. It is just part of GK, just part of addition to your knowledge. It is not for the assessment. Okay, because this is also part which is a contradictory to again. So this is very important. The responsible statement I making. This is the part which is very contradictory. It may create some contradictions between the scientists, between the philosophers, or between the country to country, based on the region basis and all. How we'll talk it. First, we'll talk about historical development of chemistry, and then we'll get into the classification of matter. So historical development. So you can say historical development of chemistry. If we discuss today's chemistry, then today's chemistry is also called as modern chemistry, and this modern chemistry has a lifespan of hardly 200 to 300 years, because the modern development of chemistry or development of chemistry in a modern way started right from 18th century, or it is counted to be started right from 18th century. Rather than we can say it is started counted, क्योंकि 2018 के बाद 18th century के बाद मॉडर्न केमिस्ट्री को मानना शुरू हुआ, वहां से उसका जन्म माना जाता है 18th century के बाद. That doesn't mean कि उसके पहले केमिस्ट्री नहीं था. तो ये जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम क्लियर कट नहीं कह सकते यार केमिस्ट्री का ये है, बट जनरली हम जानते हैं कि दुनिया भर में सारे मॉडर्नाइजेशन की जो शुरुआत होती है एवरीवेयर, हिस्ट्री की भी बात करेंगे, किसी भी चीज की बात करेंगे, तो दैट इज राइट फ्रॉम 18th century उसे काउंट किया जाता है. सो केमिस्ट्री का भी जो है ना वो 18th century के बाद काउंट किया जाता है, जिसे मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, मॉडर्न डेवलपमेंट कहा जाता है. उसके पहले भी केमिस्ट्री एग्जिस्टिंग था, वर्ल्ड वाइड था, हर कंट्री में अपना एक केमिस्ट्री था, वो अलग अलग फॉर्म में था. जैसे कि हम ग्रीक की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं, वहां पे एग्जिस्टिंग था. अरब अमीराती की बात करते हैं, वहां पे एग्जिस्टिंग था. यूरोप में भी कई एरिया और कंट्रीज हुआ करते थे, वहां पर भी था. इंडिया का भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन रह चुका है केमिस्ट्री का. एट द टाइम knowingly unknowingly we were dealing with the chemicals, we were dealing with the substances or elements related in the chemistry, but we were not clear about the things at that time. When we discuss from the perspective of 2021 या फिर 18th century के जो 18th century के बाद का जो पर्सपेक्टिव है, उससे अगर देखते हैं तो उस टाइम पता नहीं था कि we are dealing with such like substances all, but it was practice, it was in practice. तो इवन बिफोर क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तब से वो 2000 साल से 3000 साल से वो प्रैक्टिस में है केमिस्ट्री. हमारे इंडिया के अंदर भी वो प्रैक्टिस में है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स, अलग अलग तरीके से है, और हर कंट्री में अपनी एक फिलॉसफी होती है. इट मे बी अ बिट रिलीजियस फिलॉसफी और इट मे बी साइंस फिलॉसफी, बट हर फिलॉसफी के अंदर इंसान के लाइफ के बारे में आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है. इंसान के लाइफ के कंफर्ट के बारे में कोशिश की जाती है, कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की जाती है, एडिशन करने की कोशिश की जाती है, और ये जो साइंस सब्जेक्ट है उसी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है. सो उस जमाने से साइंटिस्ट उसे परसेप्ट करने की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर
हम जानते हैं वेद होते हैं, वेदास होते हैं, then से कई सारे संहितास होते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर है ऑलरेडी, फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, रिलीजियसली हो क्यों ना, बट इसके अंदर है। सो पुराणाज है, मतलब काफी सारे पुराण स्टोरीज है, पुराणाज के कुछ स्क्रिप्ट्स है हमारे पास इंडिया के अंदर। ये सारी चीजों का अगर हम लोग जायजा लेते हैं, या फिर हर एक ईरा की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर ईरा के अंदर पर्टिकुलर एक कल्चर था, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति हम बात करते हैं, उसकी एक ईरा थी, या अलग अलग जो रूलर थे उनकी अपनी एक ईरा थी। हर ईरा के अंदर ये केमिस्ट्री अलग अलग फॉर्मेट में प्रैक्टिस होता था। हमारे यहाँ पे मेडिसिनल साइंस है, मेडिसिनल साइंस के अंदर चरक संहिता वगैरह की बात करते हैं हम लोग, वेदों उपनिषदों की बात कर सकते हैं हम लोग, अथर्ववेदा की बात कर सकते हैं हम लोग। ये सब के अंदर अलग अलग चीजों का जिक्र वहां पे किया गया है और यूज किए जाते हैं। उसके कुछ गिने चुने एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज भी एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी। जैसे हम लोग जानते हैं कि अजंता एलोरा इज वेरी मतलब great creation of that era, or it is a great tourist attraction in today's time now. So you may have visited or you may have gone through Ajanta Erola. तो अजंता एरोला माना जाता है कि वो 3rd सेंचुरी के या 7th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास वो बिल्डअप शुरू हुआ, और हो सकता है कि 12th सेंचुरी तक उसका काम कंप्लीट हुआ, ऐसा माना जाता है। वहां पे जो भी स्कल्पचर बनाए गए थे, कार्विंग किए गए थे, उसके अंदर पेंटिंग्स दिए गए, पेंट्स वहां पे। आज भी अगर आप विजिट करना चाहते हो अजंता एरोला, तो वहां पे पेंटिंग किया हुआ है, उस जमाने में पेंटिंग किया है, मतलब राइट फ्रॉम 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में, माना जाता है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक उसका काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, कार्विंग चल रहा था, पूरा एक रॉक के अंदर उसे कार्विंग किया गया है, नो डाउट। उसे अगर देखते हैं तो वहां पे कलर थे उस जमाने। आज की तारीख में साइंस मॉडर्न हो चुका है, केमिस्ट्री मॉडर्न हो चुका है, और हम जानते हैं हमारे घर में भी अलग अलग कलर है, हम खुद इन्वॉल्व होते हैं हमारे घर का कलर देते समय, चॉइस करते समय, भले पेंटर देते होंगे या कभी कभी हम खुद भी पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो आज की तारीख में हम कई सारे फेस्टिवल के टाइम हमारे घर को कलर देते हैं, मॉडर्न कलर देते हैं, अलग से अलग कंपनियों के कलर लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल के बाद वो कलर टिकते हैं हमारे घर। दो द केमिस्ट्री इज इवॉल्व्ड, साइंस इज इवॉल्व्ड, वी आर नॉट एबल टू मेक दैट टाइप ऑफ कलर व्हिच वर मेड एट द टाइम ऑफ द अजंता एरोला इन 7th सेंचुरी। वहां पे उस टाइम दिए हुए कलर आज भी वहां पे उसी की तरह वैसे के वैसे आपको दिखाई देते हैं, कुछ कलर्स वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए जबरदस्त मतलब ये है केमिस्ट्री है, केमिकल्स है उस टाइम के, जिस तरीके से वहां पे कलर दिए गए वो कम से कम 1000 साल हो गए ऑलमोस्ट तब से आज भी टिके हुए। हमारे घर का कलर 3-4-5 साल नहीं टिकता है, वहां पे 1000 साल की बात चल रही है, वहां से वो कलर आज भी है। उसी जमाने में कंस्ट्रक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, इनका कुछ एक मिक्सचर यूज किया जाता था। तो कंस्ट्रक्शन भी हमारा काफी एडवांस था, उस वहां पर भी केमिस्ट्री उसके अंदर यूज की जाती। इवन डिफरेंट राजा महाराजाओं की पीरियड की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स बनाए जाते थे, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स, उनका जिक्र आता है कई सारे। तो तलवारें बनाने के लिए, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ये सारी चीजों का मतलब कुछ मेटल लाइक सब्सटेंसेस और मेटल लाइक मटेरियल बनाया गया था, जहां पे केमिस्ट्री था, उन्हें मोल्ड किया जाता था। तो मेल्ड भी करना और उसे मोल्ड भी करना, उस टाइप का एक नॉलेज उस जमाने में भी था। 1000 साल पहले, 4000 साल पहले, 2000 साल पहले, उस टाइम से भी ये प्रैक्टिस में है, अलग अलग ईरास, वहां पर भी केमिस्ट्री है। मेडिसिनल साइंस की बात करते हैं तो मेडिसिनल साइंस के अंदर भी कई सारे चूर्ण, भस्म दिए जाते थे, जो आयुर्वेदा की ट्रेडिशन में आप जानते हो, तो वहां पे कई अलग अलग टाइप के चूर्ण और भस्म दिया जाते हैं जिसके अंदर मेटल कंटेंट हुआ। और इन ऑर्डर टू ट्रीट द डिसीज, उस जमाने में ये मेटल के चूर्ण और बस अलग अलग फॉर्मेट में दिए जाते, उसके अंदर प्लांट्स भी होते थे, चाहे मेटल्स भी होते थे, मेटल का बहुत स्मॉलर पार्ट भी होता था। सो अलग अलग मतलब वेरी फाइन पाउडर के फॉर्मेट में वो दिए जाते थे। आयुर्वेदिक ट्रेडिशन की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, जो चरक संहिता और सुश्रुत के अंदर ये बताए गए थे। इवन उस टाइम सर्जरी करने के भी कुछ तरीके थे, इंडिया के अंदर खास करके सर्जरी करने के भी कुछ तरीके थे, जहां पे मेटल और कई सारे चीजों का यूज किया जाता था, ऐसा उसी के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के फॉर्मेट में, मतलब मेडिसिन के फॉर्मेट में, मेडिसिन के कुछ सुपरफिशियल फॉर्मेट भी क्यों ना हो, लेकिन उसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट था। मेटल्स का कन्वर्जन, मेटल्स का मेल्टिंग, मोल्डिंग, और टू कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड एप्लीकेबल थिंग्स एंड ऑल, वो भी उस टाइम हमारे पास हमें गैप था, नॉलेज में था, और वो बनाया जाता था। दैट वाज इन अ प्रैक्टिस राइट फ्रॉम 4000 years टिल 18th century, टिल 18th century की बात करते हैं, वहां तक वो प्रैक्टिस में था।
कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जैसे मैंने बताया कि लाइन कैल्शियम कार्बोनेट्स का मिक्सचर और कुछ चीजें मिक्स करके बनाया जाता था, कलर्स बनाए जाते थे उस टाइम। सो दैट मीन्स काफी सारे अलग अलग तरीके से वो केमिस्ट्री हमारे लाइफ में प्रेजेंट था। महर्षि कनाथ करके एक इंडियन फिलोसोफर उस जमाने के हैं, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले के। और महर्षि कनाथ ने उस टाइम जब लाइफ को इंटरप्रेट करने की कोशिश की तो उसी के अंदर उन्होंने कहा कि ये दुनिया अणु परमाणु का बना हुआ है। तो परमाणु की बात वहां पे कही गई, जिसके आज की तारीख में वी से और वी कॉल इट एज एटम। इन 18th century Dalton is the scientist who put forth the concept of atom, और he stated that the smallest particle of the matter is nothing but that, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है मैटर का, तो एटम होता है। ये 18th सेंचुरी में डाल्टन हमारे सामने थ्योरी प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट होती है, और उसी का अंदाजा लगाने की कोशिश महर्षि कणाद उस जमाने में करते हैं, जहां पे उनका कहना था कि ये दुनिया जो है परमाणु की बनी हुई है, परमाणु का। कभी कभी ऐसे कुछ चीजों के प्रूफ हमारे सामने है, कुछ चीजों के प्रूफ हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बातें तो हो चुकी है, फिलोसॉफिकल लेवल पे, थियोरेटिकल लेवल पे बातें हो चुकी है। So that's why I'm saying here that this is with historical development. It may be a contrary or maybe having a contradictions, depend upon the different types of proofs what we are having, different types of culture, religions and practice. So that's why इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग की केमिस्ट्री की एक ट्रेडिशन हमारे अंदर है। फूड की अगर बात करते हैं तो हमारे घर के अंदर या हमारे इंडियन कल्चर के अंदर पिकल जैसी चीजें आती है, पिकल्स। तो आज भी पिकल्स अगर सही तरीके से बनाए जाते हैं घर के अंदर, जो मैंगो का पिकल्स बनाया जाता है, लेमन का पिकल बनाया जाता है, या फिर और कुछ चीजों का भी पिकल्स बनाया जाता है जो फूड आइटम्स का पार्ट है, वो पिकल्स ट्रेडिशनली हजारों सालों से इंडिया में बनते आए हैं, और सही तरीके से बनाएंगे तो 3-3, 4-4 साल तक वो टिकता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग विच इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। याद रखिएगा, ये हमारे डेली रूटीन लाइफ का केमिस्ट्री है, जहां पे हमने वहां पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मुझे कि इसका मॉडर्न साइंस, मॉडर्न अवतार तो आ ही जाता है, मॉडर्न अवतार तो आना ही चाहिए, बिकॉज साइंस इज गोइंग एंड वी आर अपग्रेडिंग ऑल दिस थिंग्स, बट एट द सेम टाइम इट वाज इन अ प्रैक्टिस, इट इज इन अ प्रैक्टिस टिल दैट। पिकल बनाने की प्रैक्टिस आज भी है, जो कई सालों से है। सो इन दैट सेंस वी कैन से दिस। लेकिन 18th सेंचुरी में ये सारी चीजें सब मॉडर्न तरीके से रखना शुरू हो जाता है। एटम का कॉन्सेप्ट आता है डाल्टन की तरीके से, और सारी चीजों का प्रूफ सामने आने लगता है, एंड दैट्स व्हाई एक बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, एलिमेंट्स ढूंढे जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन होता है, फिर ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक एक चीजों की क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है, एंड देन वहीं पे ये शुरू हो जाता है हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री का, जो आज की तारीख में हम स्टडी करते हैं। सो दैट वाज, यू कैन से, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फॉर द केमिस्ट्री, जो 18th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं हमारे 11th-12th की बुक के अंदर, these are the part of modern chemistry right from 18th century onwards। तो कुछ कॉन्सेप्ट 18th सेंचुरी के हैं, कुछ कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी के हैं, कुछ 20th सेंचुरी के हैं, और 21st सेंचुरी के तो अपडेटेड कॉन्सेप्ट हमारे बुक के अंदर नहीं है, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। We have to upgrade or update ourselves, serving the needs and applying whatever the knowledge, basic chemistry what we get right from book, we have to apply that and we have to search for the updated knowledge। But ये कॉन्सेप्ट हमारे बुक के अंदर आते हैं, बिलीव करता है। So that's done. Let's move to now classification of matter, which is actually exam oriented question what we can have, classification of matter. ठीक है, so of matter. So we have the classification of matter. Matter is classified into two categories depending upon the substances. Number one, you can say here mixture, and number two is a pure substance. Pure substance. So this is the classification of, you can say, matter. तो matter का जो पहला classification आपको मिलता है वो उसी तरीके से, that you can say here, just a second. So this is the classification of matter. Matter can be classified as a mixture, and matter can be classified as a pure substance. So we know matter का definition आप जानते हो. What is the definition of mixture? Mixture contains the particles of two or more pure substances, and that is simply called as a mixture. और ये बहुत ही रफ क्लासिफिकेशन है, मतलब जैसे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री शुरू होता है 18th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम का क्लासिफिकेशन है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। व्हाई दिस इज द क्लासिफिकेशन? बिकॉज़ इन आवर डेली रूटीन लाइफ, whichever substances we are dealing, whatever substances we are dealing, most of the substances are here in the format of mixture. Most of the substances are in the format of mixture. Just a second, hold on.
sorry. I'm back again. So now when we talk about the matters के अंदर बात करें कि mixture and pure substances की बात करें हम लोग. So when we talk about the mixture in our daily routine life, we are concerned with many of the substances, and these are the things in the format of mixture, and these are the substances which are really we are dealing in our daily routine life with the substances, pure substances. Mixture contains the particles of pure substances, two or more pure substances, the particles of two or more pure substances, minimum two, max ज़्यादा भी हो सकते हैं, and that is called as mixture. Say for example आप लोग जनरली मॉर्निंग में हम लोग टी लेते हैं, चाय लेते हैं, तो चाय एक मिक्सचर होता है. हम सब्जी खाते हैं वो भी मिक्सचर के फॉर्मेट में होता है. हम आइसक्रीम खाते हैं वो भी मिक्सचर के फॉर्मेट में होता है. सो नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे बात करें हम लोग, दैट इज नथिंग विद द मिक्सचर. नीचे जितना चलेंगे हम लोग उतने मिक्सचर की सब्सटेंसेस हैं. मिनरल की बात करते हैं, हम ओर्स की बात करते हैं, ओर्स, मिनरल्स, these are generally in the format of mixture which are naturally existing into the earth crust or wherever the sources it has. So these are called as mixtures, what we can say here. And here mixture की और एक important खासियत है, that is called as composition. So the composition is not a fixed here in case of mixture, because if we are saying there are A and B substances present, so there is not a such a composition fixed for the A or B. A may be present in 50%, B may be present in 50%, or may vary. A may present 95% and B may present only 5%. So composition vary here in case of mixture, that is not fixed here. That doesn't matter even when we talk about the mixture. But when it comes to the pure substances, pure substance is a pure where it has a molecules or substances, particles of only one substance, and that is called as pure substance. Pure substance को और हम अलग तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि pure substances can be decomposed into two or more substances. Pure substances may be decomposed into two or more substances, not doubt at all. But these are the substances which consist of particles of only one substance, and that's why the composition has to be the fix over here. इसके अंदर composition fix होना जरूरी है pure substance. यहाँ पे नहीं है. Okay. Now मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर दो इसमें वापस क्लासिफाई किए जाते हैं. So this is you can say classification of mixture. So number one, that is homogeneous mixture, and number two is heterogeneous. Number two is heterogeneous mixture. So mixture के वापस दो टाइप्स होते हैं. That is you can say homogeneous and heterogeneous. The word important is homo and this is hetero. Homo का मतलब है similar, same, and hetero का मतलब है different. So we can say this hetero meaning different and homo means the same. Here you can say इसका मतलब होता है same. So when we talk about this mixture, it is a homogeneous mixture, or here we will be having a heterogeneous mixture. Homogeneous का मतलब क्या होता है? That is whenever one substance is uniformly mixed with another substance. Whenever one substance is uniformly mixed with another substance, it's called as a homogeneous mixture. For example, milk and water का example is milk and water. Now you see, milk is a purely different substance and water is a purely different substance. So when we mix milk and water, तो हम separate out नहीं कर सकते. यार milk के अंदर water यहाँ पर है और milk इतना है. भले composition हम जानते होंगे कि 1 liter milk के अंदर हमने 1 liter of water add किया. So we know the composition fixed that 1 liter both are mixed. But once they are mixed, we can't separate out them in that sense. मतलब कम से कम naked eye से तो वो separate नहीं दिखाई देते हम लोग को. And then that substance are called homogeneous. इसलिए इसे कहा जाता है कि homogeneous mixture is a mixture in which compositions are uniformly mixed with each other throughout the bulk. Uniformly mixed. मतलब आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर दूध मिला दिया या 1 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया, कहीं का भी सैंपल लीजिए, उनका प्रोपोर्शन सिमिलर है. And that is called as uniformly mixed. Then that is called as homogeneous mixture. सेम बात इसी के अंदर आती है कि हमने चलो पानी के अंदर शुगर डाल दिया या शुगर के अंदर पानी डाल दिया, दोनों भी हो सकता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी. तो मानो हमारे 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी के अंदर हमने 10 ग्राम शुगर डाल दिया. दैट इज कंप्लीटली डिसॉल्व. नेकेड ऐसे नहीं दिखा, डिसॉल्व. दैट आल्सो फॉर्म्स यूनिफॉर्म मिक्सचर. तो वो पानी में ऐसा नहीं होता कि कहीं का थोड़ा सा सैंपल आप टेस्ट करोगे तो ज्यादा मीठा लगता है और कहीं का लगेगा तो आप लोग थोड़ा सा कम मीठा लगता है. ये कब होता है कि जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर ऐड करते हैं और कम मात्रा में पानी होता है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनता है, तब वो केस में पॉसिबल है. और इसलिए मैंने कहा कि 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम लोग 2 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड दैट इज यू कैन से होमोजेनियस मिक्सचर. इसका सिंपल डेफिनेशन मतलब ये है कि व्हेनेवर वन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनदर सब्सटेंस, दैट मे बी 2 or more,
but that is forming a uniform mixture called as a homogeneous mixture. Homo मतलब similar, uniform उनका जो proportion देता है uniform होता है, and that is you can say homogeneous. That is heterogeneous. 1 लीटर पानी के अंदर हमने थोड़ा सा सैंड डाल दिया, तो सैंड अलग दिखाई देता है उसी के अंदर, भले ही मिक्सचर एक साथ हो लेकिन सैंड अलग दिखाई देता है, आपको पानी अलग दिखाई देता है. That is you can say heterogeneous. पानी और तेल हमने मिक्स कर दिया, पानी और तेल मिक्स कर दिया, एक तो वो इमिसिबल है और सेपरेट दिखाई भी देता है. That is you can say heterogeneous because there is no uniformity between the bulk of the both the substances, and that is you can say heterogeneous one. So when we talk about the mixtures can be classified into homogeneous and heterogeneous. Here we get the uniform distribution of both or all of the substances, because particles of all of the substances, it may have 2, 3, 4 or many substances, all are uniformly distributed into each other, and that's why this forms a homogeneous mixture. Or when they are not uniformly distributed, then that is called heterogeneous. That is mixture you can see. So this is the matter, mixture, homogeneous and heterogeneous. On the other hand, when we talk about the pure substances, this is the substance, this is the matter which is having the particles of only one substance, and that is called, you can say, pure substance. Pure substance is again classified in 2 categories. Pure substance is also classified in 2 categories, that is, you can say, compound and element. Compound and element. Okay. So this is compound, this is element. अभी example तो हम अच्छी तरह जानते हैं. Element के example की बात करते हैं तो we can say hydrogen, chlorine, iron, copper. These are the examples of element. Or when we talk about the compound, we can say water, H2SO4, CuSO4. These are the examples of, we can say, compound. So शायद आप में से कोई जानता होगा definition of compound and definition of element. So I would like to listen from your side. If anyone amongst you know, please let me know. Do you know the difference of compound and element? Do you know the definition of compound and element? So anyone, please, if you know, let me know. Yes, please. कोई जानता तो बता दो. जानते हो आप लोग what is compound, what is element? या फिर कोई अंदाजा है आपको किसे कहते हैं compound, किसे कहते हैं element? हाँ? Yes, please. I would like to listen from your side. So can you repeat the question? I didn't hear it. मेरा क्वेश्चन ये है कि do you know the meaning of compound and elements? So if you know, please let me know. What is meant by compound and what is meant by element? Sir, a compound is a mixture of 2 different elements. Only 2? Element is a substance. Different elements, like different elements. Yeah, 2 or more elements. Yeah, 2 or more. That's right. Correct. Prasad? Sorry, Parshad. Sir, element is a substance which cannot be decomposed into simpler substances by the ordinary chemical process. Very good. That is also one of the important definitions for the elements. No doubt. See, element is a purest form of substance which could not be further simplified into more simpler substances by any of the chemical reduction or whatever the method. उसे छोटे उसे simple compound में break down किया ही नहीं जा सकता. Say for example hydrogen is the element. Hydrogen को उससे नीचे break down नहीं किया जाता. Hydrogen exists as a hydrogen only. So that's why element is a purest form of substance which could not be further simplified, could not be further broken, and that is what is an element. What about the compound? As Samay stated, compound is the combination of 2 or more elements. See, for the H2SO4, when we talk about sulfuric acid, it has 2 atoms of hydrogen, 1 sulfur and oxygen. It has 3 elements. Oxygen element is there, sulfur is there, and hydrogen is also there. So sulfuric acid is a combination of 3 elements. तो 2 से ज्यादा elements होते हैं. से कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, CO की बात करते हैं. So when we talk about the CO, it has only 2 elements. That is carbon and oxygen. It has only 2 elements. So there may be minimum 2. Max कितने भी हो सकते हैं. There are different types of minerals or crystals जिसके अंदर 10, 12, 15 element भी हो सकते हैं. Depends upon. So in that sense, you can say compound is the substance which has the combination of 2 or more elements. So water is
compound, sulfuric acid, copper sulfate, carbon dioxide, carbon monoxide, rusting of iron, iron rust, Fe2O3. There are many substances what we can say compounds. Compound exists in the form of molecule. Compound exists only in the form of molecules. When we go little down to this one, compound only exists in the form of molecule. When we talk about the element, element may exist. These are not types. Huh? I'm not writing the types. So better, I will change the format. Okay. So element may exist in two forms. Number one, that is you can say molecule. And number two is nothing but you can say atom. Atom. This is what we can see. So when we talk about the element may exist in molecular form or may exist in atomic form. उसका एग्जांपल देना चाहूंगा मैं. हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज एक्सिस्टिंग एज अ H2. हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ H2. तो H2 इज अ मॉलिक्यूल. H2 इज अ मॉलिक्यूल. Or when we talk about noble gases like helium, neon, argon, krypton, these are the elements which exist as a monoatomic exist. So when we talk about the element may exist in the form of molecule or element may exist in the form of atom. उसके format में exist होता है. Or when we talk about the compounds की जब बात करते हैं तो compound may exist or compound should exist only in the form of molecules. वो सिर्फ molecule के format में exist हो सकता है, that is you can say atom के format में exist नहीं हो सकता. So that is what we can say regarding the compound. So everyone got the definitions clear. What we are talking about, number one, that is matter. Matter is classified into, you can say, mixture and pure substances. Mixture is classified as homogeneous and heterogeneous mixtures, and pure substances are classified into compound elements. Element may exist in molecular or atomic form, and compound only exists in a molecular form. So chemistry is a branch of science which deals with the molecules and atoms. The study of different dimensional aspects of these molecules and atoms, the reactivity and everything. That study comprises of the chemistry. Chemistry is the science of this study of atoms and molecules. This is the alternative definition of chemistry. What we can make it based on that. Yeah, with this. So this is what we can say here. There are many examples what we can put for the elements and compounds because it's very fundamental concepts. Once we start chemistry since 5th, 6th standard, we know the compound and element. But be clear about which substance has to be called as a compound, which substance has to be called as element, and which exists in the format of atom molecule or which is not. So that is important for this. Now, once it is done, being we are dealing with the matter here in the chapter, so matter ही थोड़ा सा और clear करना because study of chemistry is nothing but the study of matter itself, and matter is made up of atoms, molecules. No doubt. Finally, हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं. So that's why matter के बारे में और एक बात करना चाहते हैं कि every matter has some properties. Every matter has some sort of properties. So number one, we have matter has physical properties, and secondly, matter has some chemical properties. So we have to discuss some physical properties. We have to discuss some chemical properties of this matter, no doubt. Furthermore, also one of the important phenomena related with the matter what we have to discuss is nothing but that is measurement of the matter. ये जो matter है, इसे कैसे measure करना है? So there are different systems available to measure the matter. That is quantitative measurement of the matter is also important over there. जैसे कि हम बात करते हैं कि milk is a matter. Water is also matter. Bread is also matter. But हम जब दुकान में चले जाते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि 1 लीटर दूध दे दो. हम अगर हम ब्रेड लेने जाएंगे तो हम ऐसा नहीं कहते कि हमें 2 लीटर ब्रेड चाहिए कर. तो ब्रेड मेजर करने के लिए अलग यूनिट है. ऑयल मेजर करने के लिए अलग यूनिट है. मिल्क मेजर करने के लिए अलग यूनिट होता है. अलग तरीके से मेजर किया जाता है. So that is the part what we have to deal with here next, and that is very important, fundamental. Physics में पूरा एक chapter इसके ऊपर है बेटा लोग. So it's very important that measurement of matter, units and measurement नाम से physics में chapter आता है जो बहुत बारीकी से study कीजिएगा. It's very important. The units and measurement. यहाँ पे हम लोग उसका थोड़ा सा part देखेंगे that you can say how we can measure the matter, and that is the quantitative aspects of the matter. And one important thing is nothing but the physical and chemical properties of the matter. So this is very simple, physical and chemical properties. Units and measurement is very in-depth topic. We'll discuss in tomorrow's lecture. Till then, thank you very much. See you tomorrow. Hope you got the topic. Tomorrow we'll have the recap and we'll go ahead with physical chemical properties and units and measurements for the matter. So onwards. So till then, thank you very much. Bye-bye. Thank you. Yes.